Hello, good evening, everyone. I hope that audio is clear. Let me check the audio. Hello, good evening. Uh, Kindly check that. Am I audible to you? If I am audible, then I will proceed the class today. So today we are going to initiating the live classes on YouTube. This particular class is for class 10 ICSE board, and the chapter we are going to deal with force. So we will start with the beginning, and we are going to follow the ICSE syllabus, that is concise physics book. We are going to discuss in details. So now the first question arises that in this chapter we have to study about force as well as the moment of force. That is the thing which we have to discuss actually. So the first question arises that what is force, right? And then we will move on to the next part, that is what is moment of force, what is couple, and what is a moment of couple, equilibrium, and then we will discuss the numerical portion. So now let us start with the term that force, right? So first of all, force, if we talk about force, then force is an external agent, right, which we apply on a body in the form of push or pull. फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है विच वी अप्लाई ऑन अ बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ पुश और पुल. सो द एसआई यूनिट ऑफ दिस फोर्स इज व्हाट? न्यूटन. एसआई यूनिट इसका क्या है? न्यूटन है. एंड सीजीएस यूनिट ऑफ दिस फोर्स इज डाइन. इसका सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है, राइट. नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर ये बात करने वाले हैं दैट कि ये एसआई यूनिट वगैरह जो भी चीज़ें उसमें उसमें क्या रिलेशन है. क्वेश्चन इज दैट 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. वी ऑल नो द आंसर. if anyone knows, then you can drop a chat, right, or else we will be just doing the calculation over here, huh? So first of all, we know that force is equals mass into acceleration. We are going to just solve this, right? So force is equals mass into acceleration. The mass is measured in kg and this acceleration is measured in meter per second square. So this is the actual unit for the force. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन. 1 न्यूटन is equals 1 kg meter per second square. सो नाउ द थिंग इज, अगर 1 न्यूटन को ऐसे लिख रहे हैं, सो 1 डाइन को क्या लिखना चाहिए? इट मस्ट बी इन मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, एंड सेकेंड स्क्वायर विल बी एज इट इज. So now we will start writing like this. 1 Newton is equals 1 kg meter per second square. 1 kg means 1000 gram. For meter we can write here 100 centimeter, and for second square it is it will be written as same. So we can have a look that there are 3 zeros and 2 zero. It will become 10 to the power 5 gram centimeter per second square. So finally this unit is termed as dyne. So 10 to the power 5 dyne. So from here we can conclude that 1 Newton is equals 10 to the power 5 dyne. So exactly, Maharshi, you have written the correct answer that 1 Newton is equals 10 to the power 5 dyne. Now the next part, as per the book is, or as per the syllabus is, that we are going to just discuss. There are two terms. The first one is linear motion, linear or
rectilinear, and the other one is rotational motion. Other is rotational. So we all know that linear means straight line. That whenever a body moves on a straight line, जैसे ये surface है, this is a surface which I made over here, and if you place a block like this, and if we apply a sufficient force which can displace this block, then what happens? This block will start moving and cover some distance like this. Since the block is moving in a straight line, so we call it the motion, right? We call the motion as a linear or rectilinear motion. What about rotational motion? Suppose that we have taken a wheel. We have taken a wheel, and the center, in that the center there is an axle, right? Axle का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है. इट कैन रोटेट अराउंड दिस पॉइंट. तो बात ये इसको रोटेट कराने के लिए अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन. रोटेशनल मोशन. ठीक है, किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव मतलब रोटेट करेगा, घूमेगा, सो वी कॉल इट रोटेशनल मोशन. तो ये रोटेशनल मोशन कहाँ देखने को मिलता है? व्हील में, राइट? व्हील. इसके अलावा फैन, फैन में हम लोग को देखने मिलता है ये रोटेशनल मोशन, राइट? मैरी गो राउंड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए. सो द थिंग इज, ये जो रोटेशनल मोशन है इसके लिए हमारा एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो फिक्स होना चाहिए. इट मस्ट बी फिक्स्ड. ये क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए. बट पॉइंट इज दैट कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट के अबाउट जो है वो फ्रीली मूव कर सके. फ्रीली क्या मूव कर सके. हमारे घर पे क्या है भाई, वो विंडो डोर वो सब जो है ना, जैसे ये डोर है तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक पाइवोट बना है, राइट? तो इसमें क्या होता है, हम लोग विंडो में ऐसे फोर्स लगाते हैं या डोर में फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये रोटेट करता है. सो दिस मोशन इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन. आई होप दैट इट इज एग्जैक्टली क्लियर. हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर बना है, राइट? So I hope that this is clear till now, right? So now we will move to the next part. Next part is moment of force. We are going to discuss that one in detail. Now the audio must be much more clear without any background noise. So okay, so now let us move to the next part, that is moment of force. यहाँ से हमारा जो important topic है वो start होता है. That begins from here. Background noise. So now the moment of force. Moment. So now let us move to the next part, that is moment of force. यहाँ से हमारा जो important topic है वो start होता है. That begins from here. सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है भाई? मतलब फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सो वी कॉल इट दैट मोमेंट ऑफ फोर्स है. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, पाइवोट. ये हमारा पॉइंट क्या है? पाइवोट है. सो इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट घूम सकता है. इफ आई अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, सो क्या होगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस. ये क्या हो जाएगा, इसमें रोटेशन कुछ ऐसा होगा. सो ये रोटेशन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है. लेट्स मी टेल यू अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये एक बार है, आई मेड अ हिंज ओवर एयर. ये पॉइंट ओ नाम देंगे. हिंज भी बोल सकते हैं, पाइवोट भी बोल सकते हैं. इफ़ आई अप्लाई अ फोर्स हेयर, सो क्या होगा, ये जो हमारा ये ब्लॉक है ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव हो जाएगा. तो अल्टीमेट क्या है, रोटेशन हो रहा है. सो ये देखो, ये क्लॉक का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट? हियर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज बीइंग डेवलप्ड. यहाँ पे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हुआ है. Now the point is, if again
if again I'll take a block like this, और अगर इस पॉइंट पे हिंज है, if I apply the force in a downward direction it will start rotating in this direction. तो ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में जो हमारा वॉच है, घड़ी, वो घूमती है. So ultimate we call it clockwise movement. Clockwise movement, huh? So clockwise movement is taken negative, but anti-clockwise movement is taken as positive. So point is that कि how to define this moment of force. इतना तो समझ में आया कि moment of force अगर कहीं है, so definitely rotation होगा. आप यहाँ पर अब जैसे विंडो ओपन करना, डोर ओपन करना, वो सारा एग्जाम्पल किस में आएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स में आएगा. बट पॉइंट इज दैट फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स वी नीड टू थिंग्स. क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है हम लोग वो देखते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें एक नया टर्म जानने की ज़रूरत है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. किसी भी फोर्स का एक लाइन ऑफ एक्शन होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्शन? लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग ये है दैट की फोर्स जो हम लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं. ठीक है, सो ये जो फोर्स है एक लाइन के अलोंग अप्लाई हो रहा है. सो ये जो लाइन है, द लाइन अलोंग विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स. अब आप देखो ये पाइवोट एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में ये एक डिस्टेंस है. पाइवोट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. सो दिस डिस्टेंस इज आर. ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. सो पॉइंट इज दैट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस. मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स F इंटू आर. F इंटू आर, ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, so there is a question, sir, are you going to complete the whole chapter of force today? Yeah, first part I will complete, that is in moment of force, moment of couple, equilibrium and principle of moment. Today we will complete that part, huh? So point is that we got the formula and there is a SI unit. We can write SI unit of मोमेंट ऑफ फोर्स. तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार बुक भी रीड आउट करो तो आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद. हाँ, ये फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और ये आर एक तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं. सो यहाँ हमारा बन गया मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट प्रिपेयर हो गया. ऐसा यूनिट के अलावा हम लोग सीजीएस यूनिट को भी स्टडी करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कन्वर्जन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में. सो सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. सीजीएस यूनिट, सीजीएस में जो है फोर्स का क्या होता है? डाइन होता है. फर्स्ट हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले. मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा. सो न्यूटन मीटर अगर है तो ये ऐसा यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स का. डाइन सेंटीमीटर है तो ये भी ऐसा, ये हमारा सीजीएस यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स का. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हेनेवर वी स्टडी दैट मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका एसआई और सीजीएस यूनिट जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, देन यू नो व्हाट हैपेंस. इन दैट केस वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस टू. हम लोग यहाँ पे हमेशा कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. So now the point is that कि if I write here 1 Newton meter is equals how many dyne centimeter. So question यहाँ पे अराइज हो रहा है that 1 Newton meter में कितना डाइन सेंटीमीटर होता है. So we know that in 1 Newton meter we can just do a calculation like this. 1 Newton में देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. सिंस वी नो दैट 1 न्यूटन में क्या है? 10⁵ डाइन होता है. एंड इन 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है. सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा? 10⁷ डाइन सेंटीमीटर. So we can write a conversion factor over here like this. 1 Newton meter is equals 10⁷ dyne centimeter. So finally this is the relation in between Newton meter as well as dyne centimeter. I hope that this is clear to each and everyone.
First 10 to the power 9 centimeter. So finally this is the so now we will move to the next part. नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर क्या है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कन्वर्जन क्या होता है, न्यूटन मीटर के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया. नाउ लेट अस मूव टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है. ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस. ये एक रैंडम शेप का एक ऑब्जेक्ट है. अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पाइवोट है, पाइवोट इज एट दिस पोजिशन, and if a force is applied at this position, force, so ये इस फोर्स का एक लाइन ऑफ एक्शन होगा, एंड ये पाइवोट से लाइन ऑफ एक्शन तक एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे. वी विल ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, एंड दिस विल बी व्हाट, आर. नाउ इफ फोर्स इज इक्वल्स 50 न्यूटन and this r is equals 1 meter, then what will be the moment of force? Moment of force will be F into R. So ultimately क्या हो गया, ये 50 into 1, so 50 न्यूटन मीटर becomes the answer. ये 50 न्यूटन मीटर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया. सो आई होप दैट इस तरीके से ये जो हम लोग सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में. सो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर. अब हम लोग थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, एंड वी विल सॉल्व दैट वन. That is numerical number 2, right? Question number 2. I have taken one wooden block like this, which I made 2 dimension over here. And suppose that this point is pivot, and this is O, and there is another point, right? This is the point. This point is A, and this point is B. Now, if I apply a force in upward direction, which is 20 Newton, and at the position B we are applying the force so now the force is suppose 40 Newton, right? If the distance between OA is 5 meter and the distance between this AB is also 5 meter, now the point is that we have to find out, that is moment of force, moment of फोर्स. फोर्स कहाँ पे लग रहा है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स के वजह से. ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना हमें किसके वजह से, 20 न्यूटन फोर्स के वजह से at point O, right? Let me just write in a proper way over here so that you will be able to understand. So moment of force about O due to force applied at point A पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से, तो A पॉइंट पे फोर्स F है, राइट? F इंटू R फॉर्मूला लगेगा. अब देखो ये मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ पे, किसके वजह से, A पॉइंट पे जो फोर्स है, और पाइवोट कौन सा है, पाइवोट इज दिस पॉइंट O. पाइवोट क्या है भाई, पाइवोट पॉइंट O है. सो डेफिनेटली 20 न्यूटन, एंड R का क्या वैल्यू है, R विल बी OA. सो इट इज 20 इंटू 5, और हमारा वैल्यू क्या होगा, 100 न्यूटन मीटर. अब देखो यहाँ पर है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O. किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, पॉइंट O के अबाउट. कौन सा फोर्स, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट B, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट B पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके वजह से. सो फाइनली हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 40, और जो डिस्टेंस है इट विल बी OB. सो ये है 40 इंटू 10, सो दिस विल बिकम 400 न्यूटन मीटर. So this is the exact way to solve this, the sum related to moment of force. I hope that you understood how to apply the moment of force, means formula for moment of force. So today what we studied about force, linear and rotational motion, and then discuss the unit for force and the conversion, that is a conversion factor for force and dyne.
एज वेल एज मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस करा, और ये एक दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस करा आज के लिए. So thank you students for visiting the channel Engineers Physics.